Again, hi everyone. As I said in my previous video that very soon I will be coming with the video related to the topic elementary transformation of the chapter matrix. Okay. See, continuously I am making the videos so that you can understand properly this chapter. Okay. Elementary transformation in commerce, commercial mathematics which you are studying. Okay. Elementary transformation is related to finding the inverse फाइंड करने के लिए. तो बट अभी हम इनवर्स में नहीं जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ बाय द नेम ओनली इट इज क्लियर. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं. ओके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आर चेंज्ड व्हेन वी आर चेंजिंग, बट द चेंज शुड बी लाइक दैट कि मैट्रिक्स चेंज नहीं होना चाहिए. Matrix should not change. Okay, that's why here are fixed points given in elementary transformation that what you can do for elementary transformation. हम elementary transformation में क्या क्या कर सकते हैं, because by our own we cannot do the steps. Whatever steps are given to you for elementary transformation, that only you have to perform, that only you have to do. ओके यू कैन नॉट डू बाय योर ओन कि एक स्टूडेंट अपने मन से कोई और स्टेप कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट अपने मन से कोई और स्टेप कर रहा है. ओके अकॉर्डिंग टू द नीड द स्टेप विच शुड बी फॉलोड दैट ओनली यू हैव टू फॉलो. सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विच डू नॉट चेंजेस द मैट्रिक्स. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लियर व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. दैट मीन्स चेंजेस इन द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में चेंजेस करना है. ठीक है. So first step which you can, not first step, one of the step which you can do for elementary transformation is interchanging any two rows or any two columns. One thing I skipped here, that is elementary transformation में दो transformation include होते हैं, that is row और column. Okay, so you can do either row transformation or column transformation. मतलब अगर हम रोज में चेंजेस कर रहे हैं तो जो सारे चेंजेस करने हैं हमें वो रोज में ही करने पड़ेंगे. दैट मीन्स इफ यू आर चेंजिंग द रो देन यू हैव टू चेंज इन ऑल द स्टेप्स रोज ओनली. ठीक है. इफ यू आर चेंजिंग द कॉलम्स देन यू हैव टू चेंज कॉलम्स ओनली इन दैट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इन दैट कंप्लीट क्वेश्चन. Okay, you cannot mix row and column transformation. You cannot mix row and column transformation. Means अगर हम एक क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे स्टेप्स में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है. फर्स्ट स्टेप में हमने रो कर दिए, सेकेंड में कॉलम कर दिए, इट विल बी रॉन्ग. Okay, so if you are applying row transformation, completely you have to do row transformation. If you are applying column transformation, completely you have to apply column transformation. This you have to keep it in mind. So there are total 3 steps. 3 steps हैं for the elementary transformation. But separately if you will see all the steps applied for row and all the steps applied for column. So it becomes 6. Okay. But if you will see separately there are total 3 steps only. उसको रो और कॉलम में, मतलब रो में भी हो सकता है वो, कॉलम में भी हो सकता है, तो दोनों को मिला के 6 बोल सकते हैं. बट सेपरेटली इफ यू विल सी देयर आर टोटल 3 स्टेप्स. ओके सो वन ऑफ द स्टेप इज इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स. और कॉलम्स एवरी टाइम आई विल बी राइटिंग रोज और कॉलम्स. मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये रो में भी अप्लाई किए जा सकते हैं और कॉलम में भी. ओके सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू. ओके सो इफ आई एम फॉलोइंग द स्टेप दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप आई कैन डू फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज. ओके लाइक आई एम इंटरचेंजिंग R1 with R3. There are 3 rows. So R1 and R3 I am interchanging like this. Okay. So after transformation my matrix will be 0, 3
here R2 will remain same because I have interchanged only R1 and R3. R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R1 की जगह R3 ले जा रहे हैं, R3 की जगह R1 ले जा रहे हैं. ओके, सो दैट इज 0 3 will come here, then 2 and 1 will come here. Second row will be as it is. This is what I can do for interchanging any two rows and columns. Okay, same manner you can interchange any two columns. How? See, there are only two columns, so I can interchange here. C1 interchanges with C2. You have to take this sign for interchanging. When you are interchanging, जब हम interchange करते हैं तो हमें ये वाला symbol लेना है, ठीक है, and you have to write the step like this. C1 interchanges with C2. So after transformation of this step, your matrix will be 1 3 3. Second column will become first column, and first column will become second column. So this is what one of the step which you can do for elementary transformation, that is you can interchange any two rows or two columns. ठीक है, ये हमें क्यों पढ़ना, ये क्यों करना है interchange, that you will study in the topic inverse, okay, which is given after this. पहले ये समझ लो कि elementary transformation क्या होता है और हम क्या करते हैं elementary transformation में. Okay, what are the steps you have to follow while doing elementary transformation. So this is one of the step. Okay, now another step, that is addition or subtraction. Okay, scalar addition or subtraction, or I can say that you can second scalar multiplication. As I explained in my previous video what is scalar multiplication. Okay, but here you have to pay little attention, it will be little different. Scalar multiplication by any one row और एनी वन कॉलम. अभी तक हमने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे, दैट मीन्स एक एलिमेंट पूरे एलिमेंट से एक नंबर पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है. बट हियर इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन व्हेन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू कैन मल्टीप्लाई एनी वन नंबर बाय एनी वन रो और एनी वन कॉलम. किसी एक रो से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, किसी एक कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय एनी one row or column. Okay, how? Just see here. Suppose matrix A is okay. Now suppose I am doing the step, that is I am in changing R1. I am changing R1. ठीक है, so you have to write down like this first of all. कौन सी रो को चेंज कर रहे हैं. Okay, so I am changing R1. R1 changes to 3R1. I am multiplying R1 by 3. That is scalar multiplication of R1. R1 को multiply कर रहे हैं 3 से. Okay, so now after this step, your matrix will be, that is 1 into 3 3, 2 into 3 6, 3 into 3 9. Second row will remain as it is. This is what scalar multiplication by any one row or any one column. ठीक है, how column? Just see, if I am writing, suppose C2 changes to, I am changing C2. Okay, C2 changes to 2C2. C2 को चेंज करके 2C2 बना दे रहे हैं. Okay, so it means after this step your matrix will be, this matrix will be, okay, C1 will remain as it is, C2 change हो रहा है, 2 into 2 that is 4, 2 into 2 that is 4, C3 will remain again as it is. Okay, so this is what one of the step again you can do for elementary transformation.
in elementary transformation you can do this step also according to the need. Again I am saying why you have to do this, you will study in inverse topic. Okay, one of the steps, scalar multiplication. Now next step, third, last one. I am not saying first, second, third, I am just writing one of the steps because these steps can be followed in any sequence according to the need. ठीक है, नीड के अकॉर्डिंगली अगर हमको पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है तो हम पहले स्केलर करेंगे. ओके, देन अगर हमें रो को इंटरचेंज और कॉलम को इंटरचेंज करने की जरूरत लास्ट में पड़ रही है, सो यू विल डू एट लास्ट. Okay, so these are not sequence wise, these are the steps in elementary transformation. Now one of the last step for in elementary transformation is addition or subtraction of scalar multiplication by any two rows or I can write here columns, any two columns. Now what is given here? Addition or subtraction of scalar multiplication by any two rows or columns. मतलब किसी दो रो और किसी दो कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं along with scalar multiplication. ठीक है, how? Just see here. Suppose matrix A is given. Okay. Now suppose I am writing R2 changes to, R2 को चेंज कर रहे हैं. ओके, R2 changes to R1 plus 3R2. So what I done? I have added R1 and R2 along with scalar multiplication, that is 3R2. R2 के साथ में scalar multiplication हुआ है plus it is added with R1. So according to the need, ठीक है, you have to perform these steps. You have to do these steps. Okay, so R2 changes to R1 plus 3R2. This is what? Addition. Same manner you can do subtraction also. Suppose you want to subtract here, so you can subtract here. So after this, what will be the matrix here? This one. After this step, R2 is changing, so R1 will remain as it is, that is 2 1 1. Okay, then R1 plus 3R2. R2 को change करके R1 plus 3R2. तो 2 plus 0 into 3, that is 0. So 2 plus 0, that is 2. Okay. Then R1 plus 3R2. 1 plus 3 into 3, that is 9. 1 plus 9, that is 10. Okay. Then here R1 plus 3R2, again 1 plus 3 into 3, 9, again 10. This is how you can do elementary transformation, one of the step of elementary transformation. Same manner you can do for column also. See how? See, suppose I am changing C1. C1 changes to 2C1 plus C3. Okay, 2C1 plus C3. So after this step, the matrix will be C1 changes to. So I have to change here C1. So 2C1, that is 2 into 2, 4 plus C3. So 4 plus 1, that is 5. Okay. Then 2C1, that is 0 into 2, 0. 0 plus C3, that is 0 plus 3, 3. C2 and C3 will remain as it is. This is what? Column transformation. So these three steps you can follow for row transformation also or for column transformation also. ठीक है? So I think so you all got what is elementary transformation. That means you have to do the changes in the elements of the matrix. That is elementary transformation. There are two types of elementary transformation.
which can be performed either, which can be done either, that is row transformation or column transformation. Okay, you can either do row transformation or column transformation, don't mix it. दोनों एक साथ एक क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं. Okay, then there are 3 steps in elementary transformations which you can perform, which you can do. That is, one of the step is you can interchange any 2 rows or any 2 columns. Okay, another step which you can do, that is you can do scalar multiplication with any 1 row or any 1 column. Another step, that is last one which I have written, you can add or subtract any 2 rows or any 2 columns along with scalar multiplication. अच्छा हाँ, एक चीज़ ये है कि हम add या subtract without scalar multiplication भी कर सकते हैं. Okay, don't think that कि along with scalar multiplication ही करना है हमें. If we want to add R1 plus R2, R1 changes to R1 plus R2. Simply you can do like this. R1 changes to R1 minus R2. Simply you can do like this. Okay, so these are the steps you have to follow while doing elementary transformation. So I think so it is clear to everyone properly. Okay, in my next video I am going to explain you inverse. So after this video only I am making the video for inverse. So again we'll meet very soon. So bye everyone.